welcome back to the channel. My name is Jaylee. And I'm Emily. And I think that we have a very important birthday coming up. I know. Big birthday for our king. Birthday. SRK. You know him, you love him. November 2nd, it is our king's birthday. Wow. Amazing. You think of the span of his career, even in just like what we've seen, and I'm like, man, what is he going to do this next year? I don't know. There's nothing this man cannot do. I actually believe that. We've seen him fly. Yes. But we have a beautiful video, I believe, from our Diamond member, Beautiful Bess. Queen. Called SRK is an Emotion. We thought it would be a wonderful thing to watch to celebrate this birthday. What are your feelings, Emily? Are you excited for this? Did you see Jawan? I have not seen it yet. I am excited to watch it. SRK, ever since I first started watching him and was introduced to him on this channel, I immediately was attracted to him and his acting style and just the sheer like star qualities that he has as a performer. So I'm very excited to get into it. 1, 2, 3, play. SRK is choppable. The arms. Love him. शाहरुख खान दिल का पत्थर है, असली हिंदुस्तानी पठान. Every time when you say this is it, he seems to push that. When you say this is the envelope, he seems to tear it. If you say this is the wall, he seems to push it. If you say this is the stadium, he hits it outside the park. So I think the indescribable feeling would be Shah Rukh Khan for me. हमारा मानना है कि ये इंडस्ट्री की नाक है. He's got such a huge following. It's crazy. There's only one Shah Rukh Khan. Really Always be one Shah Rukh Khan in the industry. We'll never replace another Shah Rukh Khan. We'll never be another Shah Rukh Khan again. अगर शाहरुख खान एक्टर नहीं होते तो एक स्पिरिचुअल गुरु होते. इंडिया में एक वंडर तो है मोहब्बत का, ताजमहल. We have the second wonder, which is the 8th wonder of the world, and that is SRK. That is Shah Rukh Khan. Wow, that's huge. Theater will always be wonder of the world. न्यूकमर आए थे तो उनको कुछ भी रोल दिया गया था. एक साइड पे खड़ा रहना है, कभी कभी पीछे खड़े रहना है, कभी एक डायलॉग बोलना है. आई रिमेम्बर शाहरुख सेइंग दैट कैसे उन्होंने वो एक जो डायलॉग था वो कुछ 10,000 बार या 20,000 बार रिहर्स कर रहे हैं, एक कोने में बोले जा रहे हैं और दूसरे एक्टर्स उनको देखकर एकदम सरप्राइज हो रहे हैं कि ये भाई कर क्या रहा है. लेकिन the whole science behind it for Shahrukh was that वो एक लाइन हो या वो सिर्फ स्टैंडिंग एट द जस्ट एज अ बाईस्टैंडर हो, उनके दिमाग में बड़ा क्लियर था कि ये जो थिएटर ग्रुप है ये परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन जो ऑडियंस आ रही है उसमें जो एक लड़का है, लड़की है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है. दिस इज हिज वर्ड्स. आई रिमेंबर ही सेज सब आए हैं मुझे देखने. Look at that big suit. Huge. Could be a bigger Saigon now. Cute. जो शाहरुख खान की स्टारडम है लिटरली राइज किया है उन्होंने. टेलीविज़न किया, टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी रही. फौजी तो हम लोग आज भी याद रखते हैं. बहुत सारे और भी शोज़ किए. तब जो बॉम्बे के जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने उनको नोटिस किया, फिर वो बम्बई आए. The loss of his parents gave birth to an actor who made a choice that he wants to leave everything and come into another and start afresh. I think that's how Shahrukh was born here. शाहरुख ने अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं छोड़ी. शाहरुख को जैसे मौका मिला, वेदर इट इज दीवाना, मतलब इतना बड़ा, अरमान कोहली वाज सपोज्ड टू डू द फिल्म करियर और शाहरुख आके ओवरनाइट स्टार हो गया. बिकॉज दीवाना से शाहरुख के एक्चुअली पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग शाहरुख खान. एंड उसने एंटी हीरो, मतलब कोई ऐसा बंदा आता हीरो बनने, जो हीरो बनने आया तो एंटी हीरो से उसकी पहचान बनती है पहले, बिकॉज ही बिकेम एन एंटी हीरो अंजाम तक. Even
Bazigar, when it goes the negative thing. He is somebody who likes to, go against the tide or go against the grain. When somebody has said no, he would say, why not a yes? I bet we should react to this song. I have not seen this song yet. Yeah, that looks good. मत बोले कि ये नेगेटिव रोल है It's या an ये anti-hero. विलेन का रोल है या ऐसा रोल है. मैं इस पिक्चर I he's wearing that cape. I know, he looks like a little, like, प्रोटैगनिस्ट हूँ मैं, एंटागोनिस्ट hero हूँ. character or something. A bull tamer. और रियल में वो Yeah. फिल्म का हीरो ही था. और हम लोग ने जब कहानी सुनाना शुरू किया हम लोग दोनों ने, तो You do be the king of वो romance, ऐसे though. सामने चेयर पे भी नहीं बैठे, वो फर्श पे ऐसा बैठ गए ऐसा, और हमारे सामने ऐसा बोला सुनना शुरू किया. हमने सुनाना शुरू किया, जैसे कहानी कंप्लीट हुई वो खड़े हुए और हम लोग को गले लगे, बोला आई एम डूइंग द फिल्म. दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा. Is that her name tattooed on it? If he wanted to, he would. मेरा दिल मेरी जान तुझे लग जाए मेरी उम्र. आप नोटिस तब होते हैं जब आप डर जैसी फिल्म करते हैं जो कोई और नहीं करना चाहता है. आमिर खान कर रहे थे डर, उन्होंने तो मना कर दिया ना उसके बाद. ही हैड साइंड अप फॉर दैट फिल्म कि यार उनकी इमेज कैसी होगी. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप नोटिस नहीं होंगे. There were movies which were not considered so-called commercial. They felt like a slice of life, which we start talking right now. He embraced it with, full love. Aziz Mirza and his movies, Kundan Shah, now they were not your quintessential Bollywood, outings. जो मिल रहा था वो ले रहे थे और दोस्तों के साथ भी काम कर रहे. उस समय अजीज मिर्जा, विवेक वासवानी बहुत इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में पीपल थे और उनके लिए उसने सिनेमा किया, उनके साथ सिनेमा किया, उनके साथ ग्रो हुआ इनफैक्ट सिनेमा में. चांद तारे तोड़ लाऊं सारे. How'd you get that piano out there? बस इतना साहब है. बस इतना साहब है. Oh my gosh. Yes, boss Oh my हो, gosh. चमत्कार हो, Even राजू is बन he? गया जेंटलमैन हो. इन फिल्मों में उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा रोल, मतलब he had donned a simple man, dimples, smile, dreams, and जो audience है वो they started believing in his dreams and started seeing themselves in him. अगर अमोल पालेकर का एक अगर दौर था, अगर जब आप उनकी पिक्चरें देखते थे और ऐसा फील होता था कि हम रियल लाइफ देख रहे हैं, इन फिल्मों में वो एक फीलिंग सी थी. वो लार्जर देन लाइफ नहीं थे. मुझे लगता था वो बहुत रीचेबल था और अटेनेबल गोल्स थे. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं. What is this character in this movie? I don't know, but it's very cute. I think ये जो स्केल की बात होती है ना, स्केल की, जब राजू बन गया जेंटलमैन, एक स्केल होता है जो अटेनेबल है, जो रियल है, और जो यश चोपड़ा, करण जौहर, आदि चोपड़ा की जो सिनेमा आती है, वो स्केल बढ़ जाता है. मतलब उसकी जो प्यार करने की जो क्षमता है, यहाँ जो प्यार कर रहे थे वो एक छोटा सा गराज होता था और वो नोक झोंक होती थी और प्यार होता था. यहाँ जो था वो स्विट्जरलैंड की वादियों में वो हाथ खोलकर वो जो उन्होंने ग्लोबली he took his love or his message. I was to say, why not both? I think his lover boy image that starts happening post Dilwale. Again, if you note, it's not only a love story. We're talking about Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. That is like a landmark, and that landmark belongs to who? Obviously SRK. And now
a whole breed of cinema from there begins about falling in love, right? So if everybody is doing love stories, there was one person who became the masthead of love, right? The flag bearer. So I think that whole generation fell in love with love because of SRK. ये कहानी मुझे याद है, ये दिलवा जब ये कहानी आई उसके पास तो बोला कि ये मतलब it is not his kind of, he want to do action यशजी के साथ because yeah he want to do an action film. यशजी को उसने suggest भी किया, but यशजी only told him, I remember यशजी talking about it on one of the shows कि you know you should do this, and that's how and it took a lot of time for him to convince Shah Rukh to play that lover boy, to play that romantic hero. In my book I am writing about the finding the perfect man, but every time I'm searching for SRK और वो disappointment हो जाता है. तो ये हो रहा है because in real life also women, for when they look at their husbands, they look at their boyfriends, they want an SRK type of man कि बस ये ideal man हो, he steps out and he does all the things that SRK has done, और वो होता नहीं है. जब शाहरुख आया उस समय वर्ल्ड वाज ओपनिंग, ग्लोबलाइजेशन हो गया था. उस समय हमारी इंडस्ट्री भी मतलब हमारे पास ओवरसीज टेरिटरी नाम की चीज ही नहीं थी. ये पहला आर्टिस्ट है जो गया ओवरसीज, एंड इंडियन डायस्पोरा वाज हंग्री फॉर आर सिनेमा. एंड यश चोपड़ा ने जिस तरीके का सिनेमा बताया जिसमें मतलब इट इज टोटली इंडियननेस इन दैट सिनेमा, कंप्लीट इंडियननेस जो हमारी डायस्पोरा मिस कर रही थी रूट से दूर रहकर, और वो एक सब इंग्रेडिएंट्स दिलवाले में डाल के बनाया था फिल्म. दैट इज द रीजन शाहरुख कनेक्टेड ओवरनाइट विद द ऑडियंस देयर, with the people there, whether it is from Germany to Malaysia to in fact in South Africa and Australia, he was huge in there. There are people in thousands waiting outside it's really crazy how like famous he is just to see Shah Rukh Khan. It's an out of body experience. If you're an Indian, you're there and you're wondering, who are these people? Do they even know Hindi? Do they even watch movies? And when you speak and they say Shah Rukh Khan, and they say it, I said you can't even say his name well, but that's where I'm telling you, I have met so many of those. He stands for love, and love is universal. वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं. This would be such a good Halloween costume too. I think शाहरुख खान की जो एक पब्लिक इमेज है कि यार तू ज्ञान मत दे यार, और अगर ज्ञान दे तो कोई इस तरह से दे कि लगे नहीं कि तू ज्ञान दे रहा है. अगर आप आमिर खान वो फिल्म बनाए तो हम देखने जाएंगे. So I think जब भी वो कोशिश करते हैं उस तरह, तो जो वो सक्सेस उतना बड़ा होता नहीं है. इन द सेंस कि स्वदेश अब हम बात करते हैं उस फिल्म के बारे में, या इनफैक्ट इवन चक द इंडिया जब बनी थी तो यशराज फिल्म्स को कोई खास खुशी नहीं थी कि यार ये क्या बना गए, लोग देखने आएंगे कि नहीं. डर लग रहा था उनको उस समय, बिकॉज इनकी एक इमेज है ऐसा प्योर एंटरटेनर. So if he was born November 2nd, what is his zodiac sign? धूम मचाओ. वो सोशल मैसेज वाली सिनेमा था वो, जो स्वदेश देखा जाए, चक दे इंडिया, पेट्रियटिज्म की स्वदेश आल्सो वाज पेट्रियटिज्म. एंड शाहरुख उस तरीके का सिनेमा बनाना चाहता था और उसको मौका मिला. दिस वाज अ गुड सिनेमा फॉर हिम. आई थिंक मेरे को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ शाहरुख खान मुझे आज भी लगता है स्वदेश लगता है मुझे. He always says that the flop films that he's had in his life, they are they're little more special because they need a little more love. वो जो वीक जो घोड़े हैं, वो जो लिम्प कर रहे हैं, जो थोड़े से सक्सेसफुल नहीं है, वो फिल्मों को अगर आपने बोला या बात छेड़ी तो शाहरुख खान थोड़ा सा बोल ले, थोड़ा सा प्यार जताए, थोड़ी सी कहानियां बताए, थोड़ी सी एनेक्डोट्स बोले. I've always noticed that he's a little kinder to the movies that may have not been received so well that time. Zero पिक्चर में मैंने उनके साथ काम किया, मैंने played his father, और जिस तरह से उन्होंने बड़े एक्टर्स नहीं, जो लेसर एक्टर्स थे, जो कि कैरेक्टर एक्टर्स थे, मैं भी कैरेक्टर एक्टर था उसमें, उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर था शाहरुख खान का, ऐसा था मतलब कि जैसे कि वो जैसे लड़की के फादर होते हैं घर में, लड़की की शादी होती है और बारात आती है, तो लड़की वाले किस तरह से एकदम पूरी आओ भगत. I'm sorry guys, there's no subtitles on this one, so some of the interviews I'm not understanding, but I'm reading the little white text.
उसके अंदर तमीज, I know, I'm trying so hard to pay बात attention and catch on to और the little Well, English parts of it are in words. English. कोई भी Little एक्टरों की spurts of it are. रिस्पेक्ट, छोटे में छोटा एक्टर When you see him at home, he's a different man. He's a father, he's a brother, he's a husband. वो मैंने खुद देखा हुआ है. बच्चों के साथ वो खुद करता है सब कुछ A to Z. Whether it is when I remember tying Shuana's shoelace to everything. I cannot explain that magnetic aura he has, which is different from everyone. But there is something about him. And the way he connects to his crowds, the way he connects with his audience, like he gives that respect. मतलब उनको मिलोगे तो you will feel important. क्रिकेट की अगर हम बात करें, आईपीएल की अगर हम बात करें, तो केकेआर becomes in your head कि यार हाँ, केकेआर मतलब शाहरुख खान. I should cover IPL that time. Every wanted कि कोलकाता नाइट राइडर में घुस जाए तो शाहरुख खान की टीम में हो, प्रीति जिंटा की टीम में, शिल्पा शाहरुख खान की टीम में होना चाहिए था उनको. कोई बिजनेसमैन की टीम में नहीं जाना चाहते इस तरीके का. और उसका जो पर्सोना है, उसकी जो पर्सनालिटी, वो एड्स वैल्यू. मतलब वो बहुत बड़ा ब्रांड है. इट इज ब्रांड. अराउंड 2019 के अराउंड इर्द गिर्द उनका सेटबैक रहा होगा, प्योरली बिकॉज 4-5 फिल्में एक के बाद एक चली नहीं. एंड बाय विच आई मीन कि वो नहीं चले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिल्में नहीं चली, लोग देखने नहीं गए, इनके सारे फैंस हैं पर वो टिकट नहीं खरीद रहे, क्योंकि इनकी स्टारडम में कोई कमी नहीं आई है. हमेशा बातें शाहरुख खान की रही है, चाहे वो फिल्में सक्सेस रही हों या ना रही हों. तो देन यू रिकैलिब्रेट कि आप बैठ के सोचते हैं कि भैया क्या है, क्या हो क्या रहा है. जो इन्होंने रिकैलिब्रेशन किया, जो सोचा 2019 के अराउंड, जब बॉलीवुड ठीक ठाक चल रही थी, शाहरुख खान नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए इन हिज ओन रिस्पेक्ट, कि लोग उनसे क्या चाहते हैं. जब उन्होंने जो सोचा वो इतना सही सोचा कि जब पैंडेमिक के बाद जब बॉलीवुड ठप हो गई, तो वो जो सोचा था उनकी सोच सही थी, तो बॉलीवुड को उन्होंने रिवाइव किया. Wow. Wow. There we go. SRK is an emotion. And this is how the industry veterans perceive him. What do you think? I really loved the one line, which I guess is basically like encapsulates the title, when they were like, SRK is love and love is universal. I was like, whoa. Yeah. We obviously couldn't understand a good majority of the video, which stinks, but what little like English that we did pick up, like it's really cool seeing how everybody just respects him so much. That's really, really nice. I feel like there's not a lot of stars that can have that. Like I feel like in America there's a lot of our stars that like have their fans, but they also have a lot of haters. Yeah, exactly. I feel like SRK is pretty universally like loved. And I mean, what an honor to have so many industry professionals just like talk about how sick you are for 15 minutes. Like that's literally what this was. Like in so many different facets, right? Like there was writers, there were directors, there were all these different people that wore all different sorts of hats, also just praising SRK for what a great guy he is, beyond like even what a good actor he is. Like people were also just like, nah, he's just a good guy. Like he'll say hi to anyone. He is first, you know, a father and a husband, and I really admire that. I admire people that don't get lost in the sauce, don't get lost in the fame, and are still able to keep some sort of integrity and, you know, be themselves. It's they cool. said he was the 8th wonder of the world. That's crazy. Imagine anyone saying that about you? Like, no. Like that, you doesn't get more like complimentary than that. That's crazy. Yeah, it kind of blows my mind that I hadn't really like watched anything of his before this channel, because just seeing how universally loved he is, like the mobs of people. No one does the SRK arms out. Oh, it's a good stretch. I actually need that. Instead of the YMCA, it's gotta be the SRK. I don't know how to do any of those letters with my arms, but yeah, no wonder. I'm not surprised. He is a god within himself. He is. You don't get much more. That was good. You don't get much more famous than that. Yeah, I think it's safe to say that we really appreciate him. Thank you so much, Beautiful Mess, for recommending this beautiful video, and happy birthday, SRK. Happy birthday. You know, if you want to hop onto the channel,
we got space for you. Yeah, if you want to be in a video with us, we'll absolutely accept your offer. Yeah, like no big deal. Like just you're welcome anytime. So we'll ask questions. We won't violate any sort of contract. We're good. Yeah, exactly. Think about it. That's okay. Happy birthday. Happy birthday. Anyways, thank you guys so much. Like, comment, subscribe. You can find our social media links down in the description below. Happy birthday to SRK, and we will see you guys next time. Bye.